राणा प्रताप को पता है कि हम उतनी संख्या में नहीं है, लेकिन जज्बा में रावण प्रताप को ना हरा पाओगे। राणा सांगा जज्बा ना हरा पाओगे। उतना जज्बा कहां से लाओगे? जीत देखकर लड़ना सबके लिए संभव है, हार देख के लड़ना सबके लिए संभव नहीं है। जीत देख के लड़ना सबके लिए संभव है, हार देख के लड़ना। एंड दे डिक्लेयर्ड इट, एंड नेक्स्ट लाइन, एंड दे डिक्लेयर्ड इट as a revolt by Americans. And they declared it. It means what? First Philadelphia Convention. And they declared it as a revolt by Americans. Americans had no option. Americans had no option but to fight back. Americans had no option but to fight back. No options but to fight back. This was followed by Second Philadelphia Convention. This was followed by Second Philadelphia Convention 1776. This was followed by Second Philadelphia Convention 1776. In this convention, on 4th July 1776, in this convention on 4th July 1776, Thomas Jefferson drafted the Declaration of Independence. Thomas Jefferson drafted the Declaration of Independence. Thomas Jefferson drafted the Declaration of Independence. In this he said that every individual has a right to oppose the wrongs done by the state. Wrongs done by the state. Every individual has the right to oppose the wrongs done by the state. He also said that every individual is equal in the eyes of the state. Every individual is equal in the eyes of the state. This started American War of Independence. This started American War of Independence. American War of Independence, in which the important battles were American War of Independence, in which the important battles were Concord, Lexington, etc. In which the important battles were Concord, Lexington, etc. Initially, Americans were in critical situation. Americans were in critical situation.
critical. But in 1781, France sends military assistance. France sends military assistance under its commander Lafayette. Under its commander Lafayette. France sends military assistance under its commander Lafayette. This strengthened the position of Americans. This strengthened the position of Americans strengthened the position. This strengthened the position of Americans, and in 1783, British forces surrendered. British forces under Cornwallis. British forces under Cornwallis surrendered to American militia. British forces under Cornwallis surrendered to American militia under George Washington. British forces under Cornwallis surrendered to American militia commanded by George Washington. देखो, forces defeating militia. Army is being defeated by militia. ये तुमने एक और इवेंट देखा अपनी आंखों के सामने. तालिबान, मिलिशिया डिफीटिंग नाटो. वियतनाम डिफीटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अर्जुन डिफीटिंग दुर्योधन एंड कंपनी. रामचरितमानस में लिखा है कि सौरज धीरज ते रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका. शौर्य, धैर्य, ये सब मनुष्य के ऑर्नामेंट्स हैं. सौरज धीरज ते रथ चाका. ये जो शरीर रूपी रथ है, इसके जो पहिए हैं वो शौर्य है और धैर्य है, सत्य, शील, दृढ़ता. मैंने कहा ना, भगवान से एक चीज मांगना है, बल बुद्धि विद्या, और कुछ कहना ही नहीं. ये देखो, ब्रिटिश आर्मी वॉज डिफीटेड बाय अमेरिकन मिलिशिया. ये लोग बेचारे, मिलिशिया मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वॉरिंग ग्रुप्स. कोई डंडा लिया था, कोई लाठी लिया था, कोई फरसा लिया था, कोई बल्लम लिया था, कोई बल्ला लिया हुआ था, लड़ रहे थे सब. उत्साह. क्या हुआ? जो मैदान हार गए. अभी सब कुछ नहीं हारे. वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं. हार गए तो हार गए.
कुछ लोग कहते हैं भैया आप इलेक्शन हार गए, तुम्हारा पिता प्रधानी नहीं लड़ पाए, उनके जीवन में इतनी औकात नहीं पैदा हुई, इतना हिम्मत नहीं कर पाए। मैं हम लड़े तो और दूसरी पोजीशन थी, सारे ऑड के विपरीत